Okay, as we discussed last time, that when you are designing an agent, while designing an agent, um, you have to implement the brain of the agent, and that brain of the agent is primarily implementing the reasoning uh, ability of an agent, of an agent. Okay, so that reasoning process, uh, that what type of algorithms can be used in that reasoning process, uh, that depends upon um, the application itself. So there are some applications in which, sorry, there are some applications in which you'll see that the brain can be implemented through some search strategies. Okay, and these search strategies are of different types which can be implemented. So you have two categories of search strategies that can be implemented. One, the first type of search strategy is what you call as blind search strategies. Okay, and there are other types of search strategies which are called heuristic search strategies. Okay, so the two categories are, the first one is the blind search strategy. Okay, so you have blind search strategies, and then you have what you call as heuristic search strategies, right? So what are blind search strategies and what are heuristic search strategies? These are the different types of algorithms that can be implemented. Okay, so in case of blind search strategies, we have strategies that are not intelligent. Okay, so that's why we call them blind, right? And the second category is heuristic search strategy. And in these heuristic search strategies, they fall in the category of intelligent searches. Intelligent search and blind search, the main difference between the two. Okay, so let me just put this question to you. So in your view, a search strategy, and when we are saying a search strategy, that means that, let's put it in the form of an example. So suppose you are designing a navigation agent, and that navigation agent is supposed to find out the best path, or a path from your start node, that is your start position. Okay, so yeah, okay. So you have your start node. So Saim, I think you have to look at your settings. You're getting that sound because of that. Okay, so you have got your start node. That means that your present position. Okay, so where you are at present, and that is your start. And you want to reach a goal, which is your destination. Okay, and there could be multiple paths that could connect your start node or your start position, or multiple routes that could connect your start location with your goal location. Okay, the idea here is that a blind search strategy, so here you can apply any search strategy because you have got multiple routes and you have to choose one out of those multiple. You have to eliminate all those routes that are not connected to your goal. Okay, so there may be certain routes that could go different ways. Okay, and they are not okay, Ibrahim, I haven't really defined blind and the heuristic searches yet.
I'm just going to do that. So there are multiple paths here. Some of them are connected to your goal and some of them are not connected to your goal, right? So let me put this question to you. So in this particular setting, you have to find out a suitable path, and that suitable path is something that connects your start, that takes you to your goal. And of course, there are these paths here which will not take to your goal. So this path will not take to your goal. This path will not take to your goal. This path again will take you away from your goal. Whereas all these paths that are present here, these paths here will take to your goal. Okay. So you are actually searching, you are exploring in a space that has multiple say paths, and you are trying to identify one, or in some cases more than one paths that take you to your goal. And this is a classical example which can be represented as a search problem. And the representation of this search problem can be done in the form of a graph or in the form of a tree. The difference between tree and graph, I think you are already familiar with that, but let me just repeat that. That in case of trees, you will not have cycles. That means that if you move from one node to another node, you can't really move back in that case. Okay. And in case of graphs, you will have cycles. So that means that you can visit a node many times. Okay, so there are actually cycles. So if you move from A node to B node and then to C node and then from C back to A or back to B, if that sort of a thing happens, then you have a cycle in your representation, and that would be a sort of graph that would have. So there would be search strategies that can be applied to trees and to graphs separately. So you'll have to modify your search strategy to get rid of these cycles. So before you apply any search strategy, one thing that you'll have to do is that you'll have to convert your problem into some sort of a model. And that model, in case of search strategies, if you're applying search strategies, that model would be that you convert your map, let's say in case of a navigation problem, into a tree or a graph. Okay. Of course, with certain assumptions. So you will assume certain things and then you will convert it into a representation, into a model that is searchable. So let's say if you have got a map of Lahore and then you want to develop a navigation agent, the map of Lahore, you'll have to convert it, or you'll have to store it, or you'll have to model it using a graph or a tree, whatever is suitable. And once you have done that, then you will actually apply some search strategy. So there are two things here. The first thing is that you look at the real problem, you convert that real problem into a model, and then obviously you'll have to formulate a problem that what type of that how will you use this model. Then you will apply the algorithm, and in our case the algorithm that we'll be discussing, they are the search algorithms, and that search algorithm will provide you with a solution, and then you evaluate that solution, whether that solution is suitable or not, because you can get multiple solutions. So let's suppose you want to find out the shortest path in terms of the number of intermediate points that are present between your present position and your goal position. Or you have to find out the most, you have to find out the shortest path in terms of the time consumption. Like that a route that takes you to your destination in the shortest possible time. You may also find out a path that takes you to your goal with the minimal cost. So these are all different things that you will be evaluating, and that would depend upon your requirement. कि आप कैसे करना चाहते हैं. So let's say if you want to avoid traffic, and on the shortest possible path के ऊपर आपकी let's say cost भी कम आ रही है और time भी कम लग रहा है, लेकिन you want to avoid heavy traffic. So in that case, you will have to go for a suboptimal path, a path that is not as optimal as compared to
the others. Okay. Okay. So that is something which is which you can actually do that. So this is the AI pipeline that we have also covered earlier. So यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि जी एल्गोरिथम्स जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपने सर्च एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करना और यहाँ पे जो मॉडल आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो ऐसा मॉडल होगा जिन पे सर्च एल्गोरिथम्स अप्लाई हो सकते हैं. Right. Okay. So now we have two categories: blind search strategies and heuristic search strategies that can take the place of inside this box. Okay, so इसके अंदर आप वो search strategies को apply कर सकते हैं. So now we are making this AI pipeline more specific. Okay, and in future we'll again use this pipeline not for search strategies but for other strategies. ठीक है? Okay. Right. So let's just start with the definitions of how these are different. So I'll just start by posing a question to you and saying that in your view, what do you think a blind search and a heuristic search is? Anyone? Yes. So I think a blind search is one which searches which जिसको आपको path feed करना पड़ता है from the start to the goal, and a heuristic search is one जो खुद ही path find कर लेता है based on the algorithm. Acha. Gee, let's listen to someone else before I come to this point. Gee, Abdullah. ब्लाइंड सर्च वुड बी जो सारे पाथ्स को देखता है और रैंडमली कोई भी उठा लेता है. और ह्यूरिस्टिक सर्च थोड़ा यूटिलिटी बेस्ड होगा, मतलब इट विल फाइंड द बेस्ट पॉसिबल पाथ इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट एटसेट्रा. ओके, ये फर्क हो सकता है. जी माहिर. सर बात तो वही आ गई कि ब्लाइंड सर्च मतलब आप खुद ही रैंडमली देख रहे हैं, जैसे ग्राफ के ब्रेड फर्स्ट या डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम्स हो गए. ह्यूरिस्टिक सर्च वुड बी समथिंग लाइक के ओके ये वाली वेरिएशन ज्यादा, इट्स प्रोबेबल कि यहाँ पे मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिले, या यहाँ पे जो भी हमारा गोल है इट्स प्रोबेबल कि इस पाथ में ज्यादा मिले, क्योंकि when you search there can be many paths और हर path को explore करना possible नहीं हो सकता. Okay. So anyone else? Sarah? Okay, so I mean, in case of search strategies, search strategy will always give you a path. ठीक है? Well, always means that you are actually in need of a path here. You want to find a path that connects your present position to your goal position. A search strategy may or may not result in giving you a path. Okay, so it may not always result in giving you a path. So those search strategies जिसमें आपको path ना मिले या possibility होगा path नहीं मिलेगा, those search strategies are primarily called incomplete search strategies. और जहाँ पे आपको यकीन हो the algorithm is such कि it's almost guaranteed कि अगर आप वो algorithm enough time के लिए चलाएंगे you will get the path. ठीक है? So those search strategies are called complete search strategies. ठीक है? तो ultimate aim of applying any search strategy is to get a path. ठीक है? और ब्लाइंड सर्च के अंदर या होलिस्टिक सर्च के अंदर, दोनों के अंदर आप पाथ पहले से डिफाइन करके एल्गोरिथम को नहीं दे देते. यानी जैसे पहले एक कमेंट आया कि जी आपको पाथ उसमें हार्ड कोड करना पड़ता है, ऐसा नहीं है. आप
चाहे ब्लाइंड सर्च हो या ह्यूरिस्टिक सर्च हो, दोनों सर्च स्ट्रैटेजीज जो है ना वो अल्टीमेटली आपको एक पाथ डिटरमिन करके देंगी। और अगर वो कंप्लीट सर्च स्ट्रैटेजी है तो फिर डेफिनेटली आपको पाथ मिलेगा और इट्स गारंटीड। और अगर वो कंप्लीट सर्च स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर वो इनकम्प्लीट सर्च स्ट्रैटेजी है, देन द सर्च कुड आल्सो एंड इन अ फेलियर। अच्छा, जो बेसिक फर्क है इन केस ऑफ ब्लाइंड सर्च एंड इन केस ऑफ ह्यूरिस्टिक सर्च, इसके ब्लाइंड सर्च जो है that is in a way not a guided search strategy। ठीक है, गाइडेड सर्च स्ट्रैटेजी कौन सी होगी कि you have goal in mind and you know that this particular goal or this particular node is your goal, right? So when you are applying blind search strategy, the blind search strategy is the one that will only search in your search space without having any. Okay, so without any sense of direction, I mean, whereas heuristic searches would be searches that would only direct in that would only be directed towards your goal, और ऐसे paths वो intelligently eliminate कर देगी automatically ये search strategy, of course through the application of an algorithm which are not taking you towards your goal। ठीक है, सो एक में सेंस ऑफ डायरेक्शन इनकॉर्पोरेट की गई है। दैट मीन्स दैट इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर गोल, इफ योर सर्च इज टेकिंग टुवर्ड्स योर गोल, then that search, I mean, you will keep on searching, otherwise the search would stop in that direction। ठीक है, तो आप उस डायरेक्शन में सर्च नहीं करेंगे जिस डायरेक्शन में आपका गोल नहीं है। ठीक है, सो इंटेलिजेंट सर्च या ह्यूरिस्टिक सर्च वुड बी the one, or you can also call it informed search। So informed search would be the one that is in a way directed। ठीक है, and that directed direction that you get while you are searching is because of some additional information that the search strategy provides you, and you use that additional information to find out whether your search is taking you towards your goal or is taking you away from your goal। If your search is taking you away from your goal, then you basically change your search direction and start moving in a direction जो कि आपको गोल की तरफ लेके जाए। ठीक है, whereas blind search में ऐसा कुछ नहीं। Blind search strategies में it would keep on searching whether all paths, whether those paths are taking you towards your goal or away from your goal। ठीक है, तो सेंस ऑफ डायरेक्शननेस जो है वो इसमें लेट्स से नहीं होगी इन केस ऑफ ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटजी। सो I'll just give you an example here, and so let's say कि ये आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है। I mean, this is a sort of a graph, a map, a sort of a map that you have got, जहाँ पे the locations are given as 1, 2, 3 and G is your goal, and you start from 1। अच्छा, अगर मैं blind search strategy apply करूँगा तो the blind search strategy would look at 2 and G irrespective of this fact। So basically if you get a choice, then intelligent search strategy क्या करना चाहिए? intelligent search strategy को, intelligent या heuristic search या informed search strategy को straight away ये identify कर लेना चाहिए कि 1 is directly connected to G। तो वो 2 पे जाने की बजाय वो G पे straight away move कर लेना चाहिए। तो your search strategy should be such कि it should take you your goal straight away। सो इट आइडेंटिफाइज कि अच्छा 2 जो है वो आपको जो है आपके गोल से दूर लेके जा रहा है, राइट। सो देयरफॉर आपकी सर्च स्ट्रैटेजी इस तरह की अगर हो कि वो 2 को पहले से एवेल्युएट कर ले और देख ले कि हाँ 2 में मैं अगर जाता हूँ तो देन दिस वुड basically incur more cost, this would incur more time, say at least one additional step before I reach the goal। whereas अगर मैं left node को explore करता हूँ which is connected to 1, it is directly connected to your to my goal, so therefore
an intelligent search would identify this path and would not go to 2, would straight away move to G. अच्छा, ब्लाइंड सर्च में क्या होगा? ब्लाइंड सर्च में ये होगा कि इट वुड ट्रीट 2 एंड G इक्वली, आई मीन दोनों पाथ्स को जो है वो इक्वली ट्रीट करेंगे और वो 2 को भी उसी तरह एवेल्युएट करेगा अगर अगर वो पॉसिबल बाय लक और बाय चांस अगर वो G को पहले एवेल्युएट कर लेता है तो इट वुड रीच द गोल, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूरिस्टिक सर्चेस, आपका स्टार्ट नोड अगर ये है और आपका गोल नोड यस लेट्स से यहाँ पे है एंड देयर इज अनदर नोड दैट इज हियर, सो अ सर्च स्ट्रेटजी जो कि ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटजी है वुड लेट्स से evaluate it in this way, and if you are lucky it could evaluate the other way, and if you are evaluating it the other way फिर आप चांस है कि आप well obviously you will reach the goal, so if this is your goal node, ठीक है, फर्स्ट। अदरवाइज आपको इस नोड के थ्रू ही आपको गोल पे जाएंगे। Whereas in case of heuristic search, the search would automatically or through that algorithmic approach would focus in this area, जिस एरिया के अंदर या जिस सर्च डायरेक्शन के अंदर आपका गोल लाया करता है, and would focus in this particular direction, ठीक है। So it's more it's directed towards your goal, so you search while keeping your goal in mind, ठीक है। So that is primarily the difference. So the difference is that heuristic searches are more informed. That means that you have got more information there to work with, and that's why it's more directed, or it's highly directed towards your goal. Whereas blind search strategies are in a way you can call them search strategies that has a particular pattern to follow, and they follow that pattern irrespective कि वो पैटर्न या वो पाथ आपको गोल की तरफ लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा, ठीक है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि अगर आपके पास लेट से कि एक नोड इस 3 के आगे कोई एक और नोड हो और फिर कोई और नोड हो और फिर कोई और नोड आपके पास आ जाए, तो इट्स पॉसिबल इन केस ऑफ ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटजीज कि आप इस रूट के ऊपर ही मूव करते रहें, and you will not be able to evaluate कि क्या आप गोल की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, whether this path is taking you towards your goal or not, you will not be evaluating that, ठीक है। आप उसी पाथ के ऊपर लेट से मूव कर एक्सप्लोर करते रहेंगे which might not be connected to your goal, whereas अगर मैं heuristic search strategy यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो it should guess or it should evaluate कि this path that I am following is not taking me towards my goal, therefore I'll have to change my path, ठीक है। So if that sense of direction or that sense of achievement of goal is added into my search strategy, it becomes informed search strategy or heuristic search strategy. Okay. Achha. So if you remember this pipeline, जो इब्राहिम का question है, so if you remember this pipeline here, which I've just shown you earlier, यहाँ पे there is this step which is called evaluate, right? So evaluation step है आपके पास। So evaluation step में दोनों search strategies के अंदर, चाहे वो blind search strategies हों या आपके पास वो हों heuristic search strategies, दोनों cases के अंदर आपने node को evaluate करना है। You provide a solution and then you evaluate. And when we say evaluate, it means that at every node, when you reach at every node, it will evaluate whether this is your goal or not. Okay? So this is what evaluation would mean. So keeping goal in mind means that you always seek a direction that takes you towards your goal or nearer to your goal. Yeah, that's what I mean when I say that the goal is kept in mind. Evaluation तो आप दोनों में कर रहे होंगे, जिस नोड पे भी आप जाते हैं वहां पे आप evaluate जरूर कर रहे होंगे, and that evaluation would be whether this node is your goal node or not. ठीक है जी।
जी माहिन, I'll just come to this point कि कैसे जो है वो the sense of direction is added, and we'll just see in a while कि heuristic searches के अंदर वो कैसे वो गोल तक कैसे डायरेक्शन सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है उसमें ऐड होती, ठीक है। Okay, so so let's just see कि जी ऐसे सर आपने कहा कि ब्लाइंड सर्च में पॉसिबल है कि वो आगे वाले नोड्स में फिरता रहे और गोल तक ना जाए, तो मतलब ब्लाइंड सर्च में पॉसिबिलिटी है कि इनकम्प्लीट हो उसकी सर्च, जी जी बिल्कुल मतलब पॉसिबिलिटी, वो गोल तक सही, राइट सर। that's possible. And even in some heuristic search strategies, कुछ heuristic search strategies भी ऐसी हैं कि जिसके अंदर जो है वो complete ना हो, ठीक है। So I'll just show you an example with the help of an example. Probably this would be clear. अच्छा, so let's just move on to this. So here is an example. I mean, this is a very simple example. आपके पास जो है बहुत ही सिंपल सा ग्राफ, तो इस केस के अंदर जो ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रैटेजी है उसको स्ट्रेट अवे जो है जब उसके वन के चिल्ड्रन को वो देखता है तो एक 2 है और एक जी है, जी इज योर गोल, सो योर सर्च शुड स्ट्रेट अवे मूव टूवर्ड्स जी, ठीक है। एंड दैट इज व्हेन यू आर मोर इन्फॉर्म्ड, दैट मींस दैट व्हेन यू हैव ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रैटेजीज इन प्लेस। और अगर आपके पास ब्लाइंड सर्च स्ट्रैटेजी है और अगर आपने ये ब्लाइंड सर्च स्ट्रैटेजी के अंदर ये आपने एक रूल या प्रिंसिपल रख दिया है कि द राइट नोड द राइट चाइल्ड ऑफ वन विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, तो फिर वो डेफिनेटली पहले जी पे जाने के बजाय पहले 2 पे जाएगा और फिर 2 पे जाने के बाद फिर 2 का जो राइट चाइल्ड है विच इज 3 इन दिस केस, वो 3 की तरफ मूव कर जाएगा हालांकि, और उसको इवेल्युएट करेगा और फिर उसके बाद वहां पे जाके जब वो 3 पे पहुंचेगा, एंड इफ यू अलाउ बैक ट्रैकिंग देन इट वुड मूव बैक एंड देन फॉलो अनदर डायरेक्शन, एंड इफ यू डोंट अलाउ बैक ट्रैकिंग इट वुड गेट स्टक एट 3, ठीक है। सो इस सूरत में द सर्च माइट बिकम इनकम्प्लीट। आई मीन अगर आप बैक ट्रैकिंग अलाउ करते हैं और अगर आप बैक ट्रैकिंग अलाउ नहीं करते, दोनों केसेस में डिफरेंस आएगा। सो इस तरह की सर्च, लेट्स से कि अगर मैं वन से अगर मैं ये if I've implemented a rule which says yeah, I'll always explore the right node first, ठीक है, that is present here. So let me just say कि यहाँ से वो एक और नोड की तरफ जाता है which is this, और there is a possibility कि यहाँ पे वो इधर आ जाए, ठीक है, और फिर इधर से वो किसी और नोड पे मूव कर जाए, एंड दिस माइट गो ऑन, ठीक है, और ये आगे जो है ना वो further it expands in this direction. So let me just give you a scenario कि आप 1 पे हैं, 1 से आपने विजिट किया 2 को, और जब आप 2 पे गए आपने 2 को evaluate किया. When you say evaluate, evaluation would mean that you'll just put a test in place and say कि क्या मैं goal node पे हूँ या नहीं हूँ. Of course the answer will be no because 2 is not your goal node, so you'll further expand it. यहाँ से again वो right node को visit करेगा which is 3. Again an evaluation will be done, and that evaluation would mean that you will test whether 3 is your goal node or not, and the answer would be no in that case. Then it moves to another node, it would again do an evaluation, then it moves to another node, and this would continue. And let's suppose कि इस पूरे path के ऊपर, इस पूरी side के ऊपर जो है आपका goal exist ही नहीं करता, तो then you will actually be moving in this direction very deep, ठीक है। And let's suppose कि अगर आपकी ये डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपने ये मूव करना शुरू कर दिया, that direction has a very long chain of nodes, very long chains of nodes, ठीक है। So in that case the chances of moving to your goal would be very very slim, ठीक है। So because आप एक almost infinite sort of direction में move कर गए, and especially अगर वहाँ पे cycle exist करना शुरू कर दें, and you haven't put any check in order to avoid cycles, so then you will actually be roaming around that particular path or moving within that particular path for almost an infinite time unless you put some checks in place, ठीक है।
तो what will happen? You'll actually be lost. I mean, so that means कि आपका गोल जो था वो तो ईस्ट में था और आप वेस्ट में घूम रहे हैं और आप there isn't a possibility that you can actually come back. ठीक है. So in that case, this type of a search strategy will basically be an incomplete search strategy क्योंकि ये guaranteed नहीं है. And let's suppose that you have also restricted some time there. Say let's say कि इतने time के अंदर आपने goal search करना है, तो that would not be possible. I mean, if in this case it would be almost an infinite time. जिसमें if this chain itself has an infinite number of nodes that are connected together. और इनफाइनाइट कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसमें साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं तो देन इट बिकम्स एन सो वो इस नोड पे आएगा और दोबारा लेट्स से कि वो इस नोड पे है, यहाँ से वो इस नोड पे चला गया, और अगर यहाँ पे आई मीन इट्स नॉट डायरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड, तो फिर वो हो सकता है दोबारा इस नोड पे आए, वापस जाए, दोबारा इस नोड, सो इट माइट मूव along this direction for a very very long period, unless, as I told you, you put some additional checks on your search strategy to make it more efficient. Okay. So practically what would happen is that this type of search strategy will basically fail, and that won't take you to your goal unless you make it more robust. अच्छा, so इस तरह की search strategy क्या है? I mean, जो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप जो है वो 2 पे गए, 2 पे 3 पे गए, 3 से फिर आपने उसका राइट लिया, फिर उसका राइट चाइल्ड लिया, फिर आगे उसका राइट चाइल्ड लिया, and you actually are moving very deep into this particular search. So what type of search would this be? Yes, it is a blind search. लेकिन do you know particularly the name of this type of search? This type of blind search? Well, incomplete is a characteristic of this search. Okay. जी अब्दुल्ला मुआज ने जो बात की, this is what you call as depth first. Okay, so you explore along a particular depth, okay, first, before changing any direction. So this would mean, okay, let me just draw it again. This would mean that if you start from a particular node, let's say I have got this particular node, this is my start node, तो मैंने ये एक डायरेक्शन चूज कर ली और फिर मैं इसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं उन्हीं को मैं एक्सप्लोर करता जाऊंगा. आई विल नॉट बी चेंजिंग एनी डायरेक्शन, सो आई विल एक्चुअली बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, डीप इनटू दिस डायरेक्शन. वेयर एज स्टार्ट नोड के साथ हो सकता है यहाँ पे भी एक नोड हो, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे भी एक नोड हो, बट आई विल बेसिकली एक्सप्लोर लेट्स से 1, और फिर मैं 1 का चाइल्ड और फिर जो उसका ग्रैंड चाइल्ड और फिर उसका चाइल्ड और फिर उसका चाइल्ड. सो इस डेप्थ को आई विल एक्चुअली बी फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ डेप्थ वाइज. ठीक है. Whereas I could have actually evaluated the nodes breadth wise also. That is also a possibility. कि मैं यहाँ से पहले नोड 1 को evaluate करता और फिर नोड 2 को evaluate करता और फिर नोड 3 को evaluate करता. That means कि मैं पहले लेफ्ट चाइल्ड को evaluate करता, फिर राइट चाइल्ड को evaluate करता, और फिर अगर उसके राइट पे कोई और चाइल्ड है माई स्टार्ट नोड का तो फिर उसको evaluate करता बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. So these are the two strategies. एक strategy के अंदर let's say कि I call this as level 0, I call this as level 1, I call this as level 2, and then this is level 3 of my search and level 4 and so on and so forth. तो एक search strategy ये है कि I switch different levels. ठीक है. So 0 से 1 पे आया, 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 4 पे गया. So I'm actually continuously moving to a level deeper that is connected to my start node. ठीक है. This is what you call as depth. So you explore the depth first before exploring the breadth. और breadth में क्या है? Breadth में ये है कि you move from your start node, you go to your level 1 and you evaluate all those nodes that are present on level 1 before moving on to level 2. तो एक स्ट्रैटेजी में आप लेवल को स्विच कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी के अंदर आप लेवल स्विच नहीं कर रहे, आप लेवल उस लेवल के ऊपर जितने नोड्स हैं उनको पहले evaluate कर रहे हैं. ठीक है. And once you have evaluated, let's say यहाँ से मैंने start किया, फिर 1, 2, 3 को मैंने evaluate किया और उसके बाद जब इन तीनों को मैंने evaluate कर लिया, I've
I've made sure कि इन तीनों में से मेरा गोल कोई नहीं है. When I say evaluate, it means कि मैंने node 1 को मैंने देखा और कहा कि अच्छा क्या ये मेरा गोल है. The answer is no. Then I'll evaluate 2 and I'll check it again. The answer will again be no. Then I'll check 3 and the answer would again be no. This is not my goal node. So then I'll move to the next level, which is level 2. और level 2 के ऊपर जितने nodes हैं उन तमाम nodes को मैं evaluate करूँगा. ठीक है. And when I say evaluate, I mean that you will check whether there is a goal present on this level or not. If the answer will be no, then you will move to level 3. So this type of exploration is what you call as breadth first. Okay, so you are exploring the breadth of your graph or a tree first before moving on to the next level, right? So I hope this is clear. So that's how these two different search strategies would basically be different. जी बिल्कुल सलमान, you are absolutely right कि let's say कि if you are lucky enough और आप ऐसा हो सकता है कि under some settings your depth first gives you or takes you to your goal much quickly as compared to your breadth first search. लेकिन लेट्स से कि आप अगर एक ब्रांच आपने एक ब्रांच अगर आपने उठा ली और उसको ही सर्च करते जा रहे हैं विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, विदाउट मूविंग टुवर्ड्स द राइट नोड, तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसी ब्रांच के ऊपर कंटिन्यू करते जाएं और आप गोल की तरफ कभी जाएं ना. सो दैट्स व्हाई if the setting is such कि आप डेप्थ फर्स्ट अप्लाई करने से आप हो सकता है जल्दी गोल तक पहुंच जाए. ठीक है जी. तो एज अ रिजल्ट वी कैन से दैट कि आप गोल तक कुछ केसेस के अंदर जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट गारंटेड. क्योंकि रिमेंबर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम you will actually not be exploring this part of your graph or tree. There is a large chunk of the graph in the tree which will not be explored because you are actually moving in one direction only. Okay, so it's you can also like call it a unidirectional sort of a search. And as I told you, if you get stuck somewhere, if you get stuck in a loop or if you get stuck somewhere, then it might be a possibility कि आप डायरेक्शन चेंज कर ही ना पाए किसी वजह से. एंड I'll give you an example of that also कि जिसमें आप for example if you are searching for a word in a dictionary, ठीक है, तो आप कहते हैं ये पहला अल्फाबेट मेरे वर्ड का जो है ना वो ए होना चाहिए. ठीक है, तो दूसरा अल्फाबेट क्या हो सकता है? दूसरा अल्फाबेट भी ए हो सकता है. ठीक है, तो सेकंड लेवल के ऊपर ए आ जाएगा. और ब्रेथ वाइज अगर आप मूव करते हैं तो फिर हो सकता है ए बी आ जाए दूसरा वर्ड. और अगर डेप्थ वाइज मूव करते हैं तो तीसरे आप पहले कॉम्बिनेशन ऑफ टू को देखने के बजाय, तमाम कॉम्बिनेशन ऑफ टू अल्फाबेट्स को देखने के बजाय आप क्या करेंगे, डेप्थ में आप सिंगल से स्टार्ट करेंगे, फिर डबल पे आएंगे और फिर 3 अल्फाबेट्स पे चले जाएंगे. ठीक है, ए और इसी तरह से आप फर्दर इसी डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे. ठीक है, एंड दिस इज एन अनएंडिंग सॉर्ट ऑफ लूप, आई मीन डायरेक्शन. you are concatenating a every time. ठीक है, तो दिस if you follow this strategy तो हो सकता है आप a ही को concatenate करते जाएं and you actually keep on exploring this particular path for a very very long period of time, unless as I told you you have some restrictions, and those restrictions would be कि आपने वर्ड की लेंथ को फिक्स कर दिया. लेट्स से कि आपने ये कहा है कि अच्छा मेरी जो वर्ड की लेंथ है ना वो 5 अल्फाबेट से ज्यादा नहीं है. तो in that case you will do a sort of backtracking after reaching your depth 4, and then you will do some backtracking. फिर आप दूसरी डायरेक्शंस के अंदर मूव करने की कोशिश करें, राइट. एंड इफ यू आर लकी, लेट्स से कि आपका अल्फाबेट ही ट्रिपल ए है,
तो आपकी डेप्थ फर्स्ट सर्च आपको थर्ड स्टेप के ऊपर आपको गोल तक ले जाएगी, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट के अंदर ये आपको ज्यादा नोड्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा ब्रेथ फर्स्ट के अंदर। सो इट्स पॉसिबल कि डेप्थ फर्स्ट सर्च आपको जल्दी गोल तक ले जाए, लेकिन इट्स नॉट गारंटीड ऑलवेज। वेयर एज ब्रेथ वाइज अगर आप मूव करते हैं तो इन दैट केस इट्स ऑलवेज गारंटीड, प्रोवाइडेड यू एक्चुअली मूव टू द, लेट्स से कि आपने 5 अल्फाबेट्स का आपके पास वर्ड है एंड दैट वर्ड स्टार्ट्स विद ए, तो उस केस के अंदर आप लेवल 0 पे होंगे, फिर लेवल 1 पे होंगे। दैट मीन्स कि ऑल पॉसिबल 2 कॉम्बिनेशंस आप देखेंगे, और फिर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 देखेंगे, 3 अल्फाबेट्स, और फिर ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 अल्फाबेट्स दैट स्टार्ट विद ए, और 5 के ऊपर आप जाएंगे, तो अल्टीमेटली यू विल एंड अप एक्सप्लोरिंग ऑल द नोड्स, ठीक है। सो ब्लाइंड सर्च के अंदर इट वुड बी easier to reach your or it would almost be guaranteed to reach your goal, ठीक है। so therefore blind depth first would be considered as a complete search, and depth first would be considered as an incomplete search, though the complexity associated or the number of nodes that you will be evaluating in both would be way different from each other. ब्लाइंड के अंदर आप बहुत ज्यादा नोड्स एवेल्युएट कर रहे होंगे, वेयर एज डेप्थ के अंदर आप हो सकता है कम नोड्स को एवेल्युएट करके आप अपने गोल तक पहुंच जाएं, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। एज आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर आपका वर्ड ही ए है, इट्स अ कॉन्कैटिनेशन ऑफ 3 एज, तो फिर आप तीसरे स्टेप में डेप्थ में पहुंच जाएंगे। लेकिन ब्रेथ में आपको पहले लेवल 1 पे तमाम नोट्स को वैल्यूएट करना पड़ेगा, फिर आप उस पे जाएंगे, so you will end up having more evaluations, ठीक है। Okay, so in this particular scenario let's just see कि breath wise अगर मैं मूव करता हूँ तो फिर क्या होगा। breath wise अगर मैं मूव करता हूँ and the priority is कि the node that is on the right would be explored first. So in that case blind breath first के अंदर you will actually be evaluating 2 and then you will be evaluating G, ठीक है। तो इस केस के अंदर ब्रेथ फर्स्ट जो है would take you to your goal first, ठीक है। और अगर आपने लेफ्ट नोड को पहले एवेल्युएट करना है तो यू विल स्ट्रेट अवे मूव टू जी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस वुड बी। सो डेप्थ में आप इफ यू हैव चोजन अ डेप्थ यू विल एक्चुअली एक्सप्लोर दैट डेप्थ, और ब्रेथ में ये है कि इफ यू आर चोजन अ ब्रेथ आई मीन ब्रेथ वाइज सर्च करना है तो फिर इट वुड मूव ब्रेथ वाइज, सो लेवल बाय लेवल ये जो है ना वो मूव करेगा, and these different levels would be covered. So you can see that the breadth first search के अंदर, I mean you can try to visualize that. I'll just show you a video also जिसमें you will see that how this search strategy, both the search strategies actually progress और कैसे वो move कर रही होती, ठीक है। So we'll just see that example in a while. अच्छा, so this is what the blind search strategies are. Primarily, you are exploring a node, you are moving to a node, evaluating that, and moving to. Whereas in case of अगर मैं heuristic search या informed search लगाता हूँ, तो it should be more intelligent. उसको ये पहले ही पता चल जाना चाहिए कि अच्छा 1 के साथ तो goal directly connected है, तो I'll not be moving in the direction of 2. मैं straight away G की तरफ move करूँगा, ठीक है। I'll just show you कि वो कैसे होता है, किस तरह से वो उसको आप ये चीजें उसके अंदर आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अच्छा, the next few slides would be on implementation. So breadth first search अगर आपने implement करनी है तो simple queue को आप implement करेंगे। Here is a pseudo code for the breadth first search. Simple queue implementation है, और queue क्या है कि queue में there is a say front end of the queue and there is a back end of the queue. तो back end से जो है वो node जो है वो आप I mean node को enter करेंगे into that queue, और head node जो होगा that is at the front of the queue, उसको आप evaluate करेंगे, I mean उसको आप queue में से निकालेंगे, उसको evaluate करेंगे, and then actually you can store it somewhere in the visited nodes sort of list,
कि जी अच्छा इन नोड्स को आपने पहले evaluate कर दिया. And what will be you're doing, I'll just show you कि यहाँ पे क्या हो रहा है, and then you will see कि जो node यहाँ पे होगा, what would that node contain. Okay, and that's very important. So आपने node 1 से start किया, node 1 is present in this queue, आपने इस node को evaluate किया, this is node 1 is not your goal node, so you will throw it out, okay, into a list of visited nodes, and you will say that this is not your goal node. Acha. Then the next thing would be okay, you will add the children of 1 to your queue. Okay. So children of 1 are added to your queue. So you will repeat the same thing again. Head पे जो है या front of the queue पे जो है आप उसको evaluate करेंगे. ठीक है. Find out whether this is the new node that you have added that connects to 1. Is that your goal or not? The answer would be no, and this would primarily continue. और जब आप इसको dequeue करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, you will have to add to that queue the children of 2. ठीक है, so children of 2 आपने add कर दिया, and ultimately what would happen is that you will get this node, और यहाँ पे जब आप इसको evaluate करेंगे, so you will actually be saying that अच्छा ठीक है, you have got your goal now, and then the search would actually stop. So what is it? So the question here is that what are these nodes representing in your queue? So what are you adding to your queue here? You are adding a single node in your queue, or what? Okay. G. So what is being added in your queue in this case? Okay. So you are actually adding paths here. Okay. So आप single node add नहीं कर रहे, आप paths add कर रहे हैं. I mean, this is what is. So you are keeping track of the previously visited nodes also. Or previously evaluated nodes also. So 1G आप जब evaluate कर रहे होंगे तो 1G would mean कि आप ये भी साथ इसमें encode करेंगे कि अच्छा G जो है आप G तक कैसे पहुंचे. So these nodes here that are being or these nodes that are being added to your queue here, each node would contain a complete path. ठीक है, or the path that you have already traversed, and an additional new node will be added in this particular case. ठीक है, ताकि आप at the end of the day you are interested in the paths, you are not interested in whether a particular node is your goal node or not. Only you are also interested how to reach or how to go to your goal node. Remember, this is in the planning stage, so you have a problem at hand. आपने start location बता दी, आपने destination location बता दी, तो आपका जो navigation agent है वो आपको path निकाल के दे देगा. It won't mean कि you will actually be on the path while you are actually or you will actually be while you are traversing on the road. उस वक्त आप वो path निकालिए, हम घर में बैठ के वो path निकाल सकते हैं. And this is what you call planning. तो उसके लिए जो ऑलरेडी विजिटेड नोड्स के साथ या किस पाथ से आप जी तक पहुंचे हैं, बिकॉज देयर कुड बी मल्टीपल वेज ऑफ रीचिंग जी, वो उसका भी पता होना जरूरी है. सो दिस एल्गोरिथम विल स्टॉप हियर. देयर इज अ फर्स्ट पाथ दैट you will get that connects you to your goal. The search will stop in either case, चाहे वो breadth first हो. So this is an example of breadth first. ठीक है, so it would give you the first path, whether it's an optimal path, whether it's a best solution possible or not, it will not be evaluating that. ठीक है, it would give you the first path that gives you or that connects you to your goal. ठीक है, so that's why it's actually important. Okay, so so the other way is the depth first search. और depth first search के अंदर आप stack को implement करेंगे, और stack को implement करने के लिए आपने push and pop की जो strategy है that you will have to actually
apply. That means कि let's say कि अगर मैंने 1 को किया तो so now I have a what you call as a stack in place rather than a queue. तो आप stack को use करेंगे. Node 1 will enter, then the second paths will enter. So आपके पास let's say ये इस तरह से ये nodes आपके पास आएंगे and you will actually be pushing the nodes onto the stack, and then you will be popping those, and when you pop a node out of your stack you will evaluate it, and again the search would stop at a particular node जब आपके path के अंदर goal add हो जाएगा. At that point in time your search will stop in this case also, right? So it's almost the same जो कि आपने किया है. आप एक में क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दूसरे में स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज द सेम. और हर नोड जो आप पॉप कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, that would contain a complete path. I mean, it would have a path connected. In other words, what I'm trying to say is that you keep track कि आप इस नोड के अंदर आप अगर किसी पर्टिकुलर नोड तक पहुंचे हैं तो किस रूट से पहुंचे. So you keep track of that. ठीक है. ओके, सो अगर आपने साइकिल्स को अवॉइड करना है तो फिर आपको जो ऑलरेडी विजिटेड पाथ्स हैं उनको भी ट्रैक रखना होगा जिनको आप पहले एवेल्युएट कर चुके हैं. एंड इफ यू आर रीचिंग दैट पर्टिकुलर path, or if you are getting that path again, you will actually not evaluate it because you have already I mean you will actually not go that route again. You will have to change direction of your search, and that is what you call as backtracking. So you backtrack and change the direction. ठीक है, तो इस तरह से आप उसको अवॉइड कर सकते हैं अपनी क्या उसे कहना चाहिए, अपनी सर्च को किसी ऐसी जगह पे स्टक होने से बचा सकते हैं जहाँ पे आपका गोल एग्जिस्ट ना करता हो. अच्छा, anyways, so this is what, and then there is a small comparison of the two. I'll just show you a very simple sort of a small video जिसमें आप गेम सिनेरियो के अंदर breadth first और depth first को evaluate कर सकते हैं. Let's just see this. So this is using the Pac-Man visualization. So it's a Pac-Man game, और इसमें let's see first के how these two search strategies would look like. So we are assuming that there are no obstacles there. Okay, so this is breadth first. So you can see that ये कैसे progress कैसे कर रही है. So it's actually moving level by level, right? So it's moving level by level. एक level पे जितने nodes हैं उनको explore करता है और फिर वो next level पे move करती है. अच्छा, और depth wise, so you can see कि it's at every step it's actually changing direction. I mean changing levels. ठीक. So it might be possible कि आप in a particular setting आपकी depth first जो है वो ज़्यादा efficient तरीके से आपको जो है वो दे सके result. Depth first में possibility है. अच्छा, okay, so let's say कि I'll just, before I move on to the next thing, this is again a Pac-Man situation. तो इसमें भी आप search strategies apply कर सकते हैं. And I'll leave a question for you saying कि अच्छा इसमें आप देखें कि इस वक्त क्या हो रहा है. Is it depth wise या breadth wise search हो रही है? So the search is for it's actually a situation where you want to maximize your score. ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा अगर मैं ब्लाइंड सर्च स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूँ तो क्या मैं हाई स्कोर कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा. ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई टू एक्सप्लोर. अच्छा, गेम्स के अंदर आप ये सर्च स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं. देन
लेट्स से कि नेविगेशन प्रॉब्लम का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपके पास एक मैप है, उस मैप को आपने ग्राफ या ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और फिर उसके ऊपर सर्च स्ट्रेटजी अप्लाई की. अनदर प्रॉब्लम कुड बी नॉलेज ग्राफ्स. So knowledge graph is something that is quite commonly used these days in social media analysis, और वहाँ पे भी आप इसको use कर सकते हैं. For example, you are actually gathering information and then connecting that information together. And let's say if you want to reach Eiffel Tower, and if some tourists want to plan this trip, so you can use this knowledge graph and search this knowledge graph to find out. And this is just an a small sort of representation of your knowledge graph. Generally, it would be a huge sort of a graph that you will have, and you can apply these search strategies to actually reach your destination. Okay. And if someone wants to like visit multiple places, तो फिर उसका वो एक path भी determine करके आपको दे सकता है. तो this is another application of say search strategies, right? Okay. Right, G. So now what I'll do is that I'll just share another let me just another set of slides that would give you some further insight into these search strategies. Okay, और कुछ nomenclature को भी हम देख लेते हैं before we move on. Okay. Just wait for a minute. Right. So yeah. So now let's just I'll just give you a flavor of how the heuristic search would work. Okay. So heuristic search strategies जो हैं, these are what you call as search strategies that are informed. That means that they'll actually take you they'll have some direction some sense of direction attached to it, और फिर आप उसको use कर सकते हैं for reaching your goal or directing your search towards a particular direction. ठीक है. Okay, so before we actually discuss this heuristic search के अंदर जो है this is primarily the difference. आपके पास जो है वो फर्ज करें this node, the central node is basically your start node and the other one is your goal node. तो आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली ये होना चाहिए कि आपकी सर्च जो है that should basically look ahead towards your goal. So एक खास चैनल के अंदर आपकी सर्च जो है वो होनी चाहिए and that channel should be basically directed towards your goal. ठीक है. जी, I'll come to Abdullah to IDA, iterative deepening algorithm के ऊपर भी आएंगे, but I just want to give you a flavor of heuristic search strategy before we
So I'll come back to the blind search or heuristic search again. Do that additional part with of IDA type algorithms when we'll do the second round of discussion. Okay, so इस केस में क्या होगा? इस केस के अंदर heuristic search के अंदर, so I'll just want to give you an insight into this. Heuristic searches के अंदर primarily ये sense of direction आप कैसे add करेंगे? ठीक है? So any ideas? जी, I'll do that, Shiza. Any ideas कि sense of direction कैसे add की जा सकती है? Prior knowledge, ठीक है. अहमद जुबैर कहते हैं जी prior knowledge. So what type of prior knowledge you think can be added? अच्छा, right. ठीक है. तो कोई और? Anyone else? Results from the old searches. अच्छा, आप कह रहे हैं कि history maintain करें. Compass. जी, 5. This is a good one. I mean आप compass पकड़ा दे उसे. While he is doing the planning part, आपने वो ड्राइंग रूम में बैठ के प्लान कर रहा है या घर में बैठ के बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी वो प्लान कर रहा है, तो वो कंपास उसमें कैसे इस्तेमाल कर सकता है वो? आई मीन दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू एक्सप्लोर. अच्छा, और क्या है जी? कंडीशंस नियर द गोल शुड बी स्टोर्ड एज वेल. ओके. टोपोलॉजी ऑफ द नोड्स. जी फातिमा, टोपोलॉजी ऑफ द नोड्स. फिर यानी कि उसका जो पूरा मैप होगा कि गोल किधर और स्टार्टिंग पॉइंट किधर है, किस तरह बोले. ओके, लेकिन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर गोल का तो पता है, लेकिन गोल किधर है ये कैसे पता चलेगा? ये तो नहीं आपको पता. अगर आपको ये पता है कि गोल किधर है तो आप डायरेक्टली उधर मूव कर जाएं, फिर आपको सर्च करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, आप समझ लें. जी, सारा कह रही हैं जी नॉलेज अबाउट द डोमेन ऑफ इट्स सर्च. Okay, so this would mean that you'll have some characteristics of your goal in mind, and आप obviously evaluate जब nodes को कर रहे होंगे तो you will keep those characteristics in mind and you will actually be comparing your present node or your current state with your goal characteristics और वहीं से आप identify करेंगे. अच्छा, so let me just give you a simple sort of an idea here, and then we can expand this further later on. Okay, so this is your start node. Okay, and then you have your goal node somewhere here, and you really don't know कि कौन सा path इधर आपको goal तक लेके जाए. And let's assume कि आपके पास एक intermediate node है, and I'll call this intermediate node as, let's say, 1. And from your start node you have reached your goal node, your node number 1. ठीक है, आप यहाँ तक पहुँच चुके. And of course you will have to incur some cost in reaching that particular node, right, which is 1. So let's assume that you are at 1. So if you are at 1, you already know कि आपने कितनी cost आप incur कर चुके हैं already. I mean cost of traversal, let's say, of moving from or the path cost. Let's just put it in this way कि आपको path cost का पता चल गया है 1 तक. So S से 1 तक की कॉस्ट का आपको अंदाजा हो गया कि कितनी कॉस्ट आपने इंकर की है, बिकॉज यू हैव एक्चुअली ट्रेवल्ड इट. लेट्स अज्यूम दैट कि आपने ऑलरेडी उसको ट्रेवल कर लिया. 1 तक आप ट्रेवल कर चुके हैं और 1 पे आप बैठे हुए हैं, और 1 पे आप जब आप पहुंचे हैं तो अब आपने डायरेक्शन सर्च करनी है कि किस डायरेक्शन में आपने अपनी सर्च को लेके जाना है. क्या इस डायरेक्शन में अपनी सर्च को लेके जाना है, या इस डायरेक्शन में आपने अपनी सर्च को लेके जाना है, या इस डायरेक्शन में आपने अपनी सर्च को लेके जाना है. तो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डिसाइड. लेकिन यू आर सिटिंग एट 1. सो 1 इज योर प्रेजेंट स्टेट. यानी दैट मीन्स कि आपने जो भी अपना वो डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया हुआ है, उस डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास इस वक्त जिस नोड को आप एवेल्युएट कर रहे हैं, दैट इज नोड नंबर 1. You have already evaluated the previous nodes
और आप 1 तक पहुंच चुके हैं विदाउट बाय इम्प्लीमेंटिंग सम algorithm. So the cost that you have already incurred, we call that cost as G of 1. G of 1 would mean that this is primarily the cost. G is यहाँ पे दो G's इकट्ठे हो गए, लेकिन let's say कि capital G जो है that is representing your goal node, and this function G is actually representing, or small g is representing your path cost. So G of 1 would mean that the path cost from S to 1, S is your start node. ठीक है, दिस इज द कॉस्ट दैट यू हैव ऑलरेडी इनकर्ड. आई मीन ये आपको पाथ कॉस्ट का पता चल चुका है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इन योर एल्गोरिथम हैज ऑलरेडी मूव्ड फ्रॉम S to 1. तो आपको पता है कि आपने कितने नोड्स विजिट करके आप वहां तक पहुंचे हैं. एंड नोड टू नोड ट्रेवर्सल कॉस्ट अगर आपको पता हो कि एक नोड से दूसरे नोड तक जाने की कॉस्ट कितनी आप इनकर कर रहे हैं, यू कैन ऐड अप दोस कॉस्ट्स टुगेदर टू गेट दिस G कॉस्ट, राइट. इसका आपको पता चल चुका है कि दिस इज द कॉस्ट दैट यू हैव एक्चुअली इनकर्ड. अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 से आगे मैंने कैसे मूव करना है. अच्छा, 1 से आगे मूव करने के लिए ऑब्वियसली G आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी इस G ऑफ लेट मी से कि G ऑफ कैपिटल G जो है वो अभी आपको नहीं पता, ठीक है, बिकॉज यू हैवंट रीच योर गोल येट. तो आपको अभी तक नहीं, पाथ कॉस्ट का अभी तक आपको नहीं पता होगा. तो दिस स्मॉल G इज योर पाथ कॉस्ट. पाथ कॉस्ट का मतलब ये है कि यू स्टार्टेड फ्रॉम S, यू हैव रीच्ड सम इंटरमीडिएट नोड्स और उसके बाद आप 1 तक पहुंचे. आई मीन योर एल्गोरिथम हैज रीच्ड 1. तो जब आप 1 तक पहुंच चुके हैं तो दैट मीन्स कि नाउ बिकॉज यू हैव गॉट दिस पाथ बाय इम्प्लीमेंटिंग सम सर्च एल्गोरिथम, तो पाथ आपके पास आ चुका है, तो आप उसकी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं. इसी तरह G ऑफ 1 तो आपको पता है, लेकिन G ऑफ G आपको नहीं पता क्योंकि अभी तक आप अपनी G तक नहीं पहुंचे, अपनी कैपिटल अपनी गोल तक नहीं पहुंचे अभी. तो दैट्स व्हाई G ऑफ कैपिटल G इज नॉट नोन टू यू. ठीक है, सो आपने 1 पे आके अपनी डायरेक्शन को सेट करना है. तो ऑब्वियसली जैसे पहले बात की, सारा ने भी बात की और फातिमा का भी पॉइंट जो था दैट वाज वेरी क्लोज टू व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग. और उसके अलावा भी जो पहले अहमद ने भी जो बात की थी जी, प्रायर नॉलेज वो आप यूज करेंगे. So what type of prior knowledge? So we'll just see now, okay, what type of prior knowledge you will actually be adding. Let's say कि आपको कोई बताता है कि अच्छा 1 पे पहुंचने के बाद you will actually 1 पे पहुंचने के बाद there are some landmarks जो कि आपको बताए जाते हैं कि you will turn left near let's say building number X, what that building is. कि आप 1 पे जब आप देखते हैं तो you will find on the left hand side a building, a tall building called building X. तो आपने उस तरफ मूव करना है और किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करना. आई मीन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. तो आपको कुछ लैंडमार्क्स आपके ज़हन में है, ठीक है, या आपको कुछ लैंडमार्क्स का पता है बिकॉज यू हैव एक्चुअली हर्ड फ्रॉम समवन. किसी ने आपको बताया कि जी अच्छा जब आप 1 पे पहुंचेंगे तो फिर आप ये करें. तो ऐसे केस के अंदर व्हेन यू हैव दैट प्रायर नॉलेज विद यू और सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर गोल, कि किस डायरेक्शन में आपका गोल है, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन ऑब्वियसली एलिमिनेट ऑल द अदर पाथ्स. तो अगर आपके पास कुछ माइलस्टोन्स आपको आई मीन कुछ लैंडमार्क्स आपको दिए हुए हैं, तो यू कैन स्ट्रेट अवे एलिमिनेट लेट्स से दिस डायरेक्शन, क्योंकि इसमें तो आप नहीं, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे आपका लैंडमार्क इधर नहीं है. जिस लैंडमार्क की सर्च आप कर रहे हैं इस डायरेक्शन में भी आपको लैंडमार्क नहीं मिलेगा. तो ऑब्वियसली यू विल एक्चुअली बी चूजिंग दिस डायरेक्शन जिसमें वो लैंडमार्क आपको मिलेगा. ठीक है, सो what is this landmark telling you? This landmark in a way वो ये कहेगा कि अच्छा एक तो ये सिनेरियो. So that means कि इसके अंदर आपकी कॉस्ट जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, इसमें भी आपकी कॉस्ट इनफाइनाइट हो जाएगी अल्टीमेटली, बिकॉज यू विल एक्चुअली बी गोइंग अवे फ्रॉम योर नोड और आप कभी भी अपने नोड तक नहीं पहुंच पाएंगे इसी वजह से. और यहाँ पे आपके पास कॉस्ट जो है वो फाइनाइट आ रही है क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर लैंडमार्क को आप फॉलो कर रहे हैं.
अच्छा, एक तो ये सिनेरियो, और दूसरा सिनेरियो ये है कि हाँ ठीक है, अगर आप वहाँ से लेफ्ट टर्न भी कर लेते हैं, आपने नोड नंबर 1 पे पहुँच के बिल्डिंग एक्स की तरफ कर लेते हैं, लेकिन इफ़ यू आल्सो गो टू राइट और बिल्डिंग वाई के पाथ से आप फिर अपना पाथ चेंज कर लेते हैं, दैट वुड आल्सो टेक यू टू योर गोल. सो नाउ यू हैव गॉट टू अल्टरनेटिव्स, ठीक है, फ्रॉम 1. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन. आपके पास 1 है, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं फ्रॉम योर स्टार्ट नोड, और फिर आपके पास दिस इज योर गोल नोड कैपिटल G, और यहां से एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, ठीक है. सो समवन टेल्स यू कि अच्छा इस पाथ पे अगर मैं ऊपर वाले पाथ से जाता हूं तो इट वुड टेक लेट्स से 1 आवर टू रीच योर गोल, और अगर मैं नीचे वाले पाथ से जाता हूं तो इट वुड टेक 3 आवर्स टू रीच योर गोल. सो लेट्स से कि आपके पास ये प्रायर नॉलेज इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, ठीक है. So at 1 you will try to, I mean this 1 and 3 would primarily tell you the cost that you will be incurring in future while sitting at 1. आप यहाँ पे बैठ के प्लान कर सकते हैं कि अच्छा अगर मैं पाथ ए फॉलो करता हूँ तो दैट वुड हैव लेस कॉस्ट, और अगर मैं पाथ बी फॉलो करता हूँ दैट वुड हैव हायर कॉस्ट, ठीक है. So obviously when you are at 1 you will choose a path that would have lower cost, so you will probably be choosing this path rather than this path because A gives you more less cost compared to B. लेकिन लेट्स सपोज कि यहाँ पे जाके इस केस के अंदर आपका जो एनालिसिस होना चाहिए वो आपको ये भी बता रहा हो कि कौन सा पाथ रहता है. दो A and B both are connected to G, but A is more say appropriate in terms of reducing the cost, ठीक है. तो एक वो सिनेरियो है जिसमें आपकी कॉस्ट इनफाइनाइट हो जाती है, एक वो सिनेरियो है जिसमें आपकी कॉस्ट इनफाइनाइट नहीं होती, लेकिन सम paths incur more cost and the other paths incur less cost, ठीक है. So as a result you will actually be using you'll have to like incorporate this type of an information into your search strategy that would help you guide कि आप A को फॉलो करें rather than आप B को फॉलो करें, ठीक है. जी माहिन, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ठीक पॉइंट आउट किया है कि तो जो हेरिस्टिक्स हैं, दोज हेरिस्टिक्स या जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, दैट इंफॉर्मेशन वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है. सो लेट्स से कि मैं एक और सिनेरियो आपको देता हूँ बिफोर वी एक्चुअली एंड टुडेज सेशन. लेट्स से कि एक बहुत ही कॉमन गेम है जो कि आप खेलते हैं विच इज टिक टैक टो, ठीक है. तो अगर आप क्रॉस एंड डॉट्स वाली गेम है, तो लेट्स से कि अगर आपके पास एक सिनेरियो इस तरह का है तो आप डॉट लगाएंगे, ऑब्वियसली डोंट वांट द अदर प्लेयर टू विन, तो नाउ द ऑब्वियस चॉइस वुड बी टू पुट अ डॉट हियर, ठीक है. एंड दैट इज समथिंग बिकॉज you know the rules of the game and you don't want your opponent to actually win. Therefore out of all the other possibilities, if you want to implement कि मैंने कौन सी मूव करनी है डॉट प्लेयर ने, तो there should be some prior information कि अगर एक ही रो के अंदर आपके पास दो क्रॉसेस आ जाते हैं तो then you actually put a dot in between, ठीक है. तो इनको प्रेफर करने की बजाय यू विल एक्चुअली बी प्रेफरिंग दिस, ठीक है. हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, दैट्स राइट. लेकिन दिस इज एन इंस्टेंटेनियस डिसीजन, ठीक है. तो आप लॉन्गर गोल को अपने जहन में इस वक्त ऑब्वियसली बिकॉज यू विल एक्चुअली लूज इट इमीडिएटली अगर आप यहाँ पे ये नहीं करते. सो द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसमें भी है, आपने वो नहीं देखना. आप यहाँ पे जो गोल है वो ये है कि यू डोंट वांट द अदर प्लेयर टू विन, ठीक है. तो इसलिए आपकी जो मूव है दैट वुड बेसिकली बी इन दैट डायरेक्शन. तो अगर मैं गेमिंग सिनेरियो में देखूंगा तो मेरे जो रूल्स होंगे या मेरी जो इन्फॉर्मेशन होगी जिसको मैं, और उस इन्फॉर्मेशन को मैं ह्यूरिस्टिक कह रहा हूँ, दैट ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन वुड बी डिफरेंट एंड इट वुड चेंज फ्रॉम सिनेरियो टू सिनेरियो, ठीक है जी. तो अगर आपके पास इसी तरह से वो 8 पजल प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं,
तो all these problems or all these gains उसके अंदर जो information that you'll actually be using in order to evaluate or in order to help your search become more efficient, वो information different होगी. ठीक है, रोबोट नेविगेशन के अंदर वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है और वो डिफरेंट तरीकों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. ओके, सो इन आवर डिस्कशन next time we'll see के इस heuristic search को further we'll explore this and we'll try to find out कि what are the different ways in which these heuristics can be calculated. ठीक है, and that would be our next discussion. Yes. सर तो बेसिकली बाइनरी सर्च भी एक हॉरिस्टिक सर्च मेथड का ही एक एग्जांपल नहीं होगी, जी बिकॉज बिल्कुल उसमें भी जी जी राइट. हॉरिस्टिक सर्च की एक एग्जांपल है, लेकिन उसमें आप प्राइमरीली क्या कर रहे होते हैं, आप सिर्फ जी ऑफ अ पर्टिकुलर नोड आप एवेल्युएट कर रहे होते हैं. ये जो फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट है ना, जैसे 1 से आगे क्या कॉस्ट इनकर होगी उसको आप कंसिडर नहीं कर रहे होते. आप 1 राइट जितनी कॉस्ट इनकर कर चुके हैं सिर्फ उसको देख रहे हैं. राइट. ठीक है, सो इट्स नॉट फ्यूचरिस्टिक, इट्स नॉट अ लुक अहेड सॉर्ट ऑफ सर्च. ठीक है, वेयर एज ह्यूरिस्टिक सर्च ऐसी है कि जिसके अंदर आप जिस जिस नोड के ऊपर हैं वहां से आप ये भी देख रहे हैं कि आप कितनी कॉस्ट इनकर करके आए हैं फ्रॉम एस, और आगे कितनी कॉस्ट इनकर होगी. तो दोनों कॉस्ट्स को आप देख रहे होते हैं. ठीक है, so I'll have that detailed discussion inshallah next time. Okay, thank you for today. So we'll meet again inshallah. Allah Hafiz.